Okay, student. Next, again we have discussed the right chapter number 6, life process. Next topic is the nutrition. Right. Already we have discussed right in last lecture what is nutrition. Clear? Nutrition is also play a very important role, right, to all living organisms. Means alive living organisms is there, right? Okay. We have discussed today how do living things get their food and autotrophic nutrition or heterotrophic nutrition. Clear? Nutrition means what? When we walk or ride a bicycle, we are using of energy even when we are not doing any apparent activity. Energy is needed to maintain a state of order in our body, right? Means when we are right different activity, right, day duration or night duration, right, this activity, suppose one example is given here, right, when we walk और राइड अ बाइसिकल, या तो हम चल रहे हैं या तो हम बाइसिकल चला रहे हैं, राइट, दोनों एक्टिविटी एनर्जी, दोनों में एनर्जी का यूज होगा. क्लियर? वॉकिंग करने में भी और बाइसिकल चलाने में भी. क्लियर? ओके, मींस दोनों को वर्क करने के लिए बोथ एक्टिविटी, राइट, विदाउट एनर्जी, विदाउट न्यूट्रिशन इज नॉट पॉसिबल, राइट? ओके, हियर we also need the material from the outside in order to grow, develop the synthesized proteins and other substances needed in the body. The source of energy and material is food we eat. Means आप जितने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में व्हाट, डे टू नाइट ड्यूरेशन, राइट, वॉकिंग, चलना, बोलना, डिफरेंट एक्टिविटीज करना, राइट, ऑल without nutrition, without energy, right, all activities not possible is there, right? और वो एक्टिविटी के लिए हम एनर्जी किसमें से लेते हैं? वो एनर्जी का हमारा रिसोर्स है हमारा फूड, जो कि आउटसोर्सिंग है, हम बॉडी के बाहर से लेते हैं. क्लियर? एंड वो जो हमारा आउटसोर्सिंग फूड है, राइट, दिस इज वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो कार्बन रिलेटेड सब्सटेंस है, राइट, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो कार्बन रिलेटेड एनर्जी है. क्लियर? ओके, फर्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. अब हम ये डिस्कस करते हैं कि लिविंग थिंग्स मींस अलाइव, राइट, हाउ टू गेट द फूड, वो फूड एग्जैक्टली लेते हैं कैसे हैं, राइट? ओके, the general requirement for energy and material is common in all organisms, but it is fulfilled in a different ways. Some organisms use the simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water, and these organisms are autotrophs, including the green plant and some bacteria, right? Means in our surrounding, right, some living organisms, they are prepare the own food, right, they are prepare the raw material means here carbon dioxide, right, carbon dioxide, water and chlorophyll or presence of sunlight, right. Some living organisms, they are prepare the own food, right, and use the natural things, carbon dioxide, water, right, or sunlight is here natural things, right, and they have prepared the own food, and this food is a form of glucose, means C6H12 or O6. Clear? Or water or oxygen is here, byproduct is there, right? Means some living organism, they are prepared the own food, they are use the carbon dioxide, water, present of sunlight, right, and after preparation of food, energy is a form of glucose, right, formula of glucose is C6H12O6. So this type of living organism is called the autotrophic nutrition, right, or autotrophic, right. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और बैक्टीरिया इस एग्जांपल इज देयर. क्लियर? मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे सराउंडिंग ऐसे हैं, वो नेचुरल थिंग्स का यूज करते हैं. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो नेचुरल थिंग्स है, सनलाइट इज आल्सो नेचुरल थिंग्स इज देयर. क्लियर? जब वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, उसके बाद वो एनर्जी जो है ग्लूकोज के फॉर्म में रिलीज करते हैं, और वाटर और राइट, water or oxygen is byproduct is there, और end of day, right, this energy और oxygen वो हम utilize करते हैं, right, other animals use करते हैं, right, मतलब some animals ऐसे हैं, some living organisms ऐसे हैं, they are prepared the own food automatic, इसलिए उनको हम autotrophic nutrition बोलते हैं. Clear? Remaining animals वो इन पे depend है, right, energy के लिए. Clear? Just like the form of
ग्लूकोज, अगर हम हमारी ही बात करें, एनिमल्स की बात करें, क्लियर, तो वी आर टेक द दाल भात साग रोटला रोटली फ्रूट न्यूट्रिशन डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, राइट, ऑल आर इज द रिसोर्सेज ऑफ, राइट, ग्लूकोज, वो सब ग्लूकोज रिलेटेड प्रोडक्ट है, राइट, किसी न किसी प्लांट का ट्री का पार्ट है वो, राइट, मतलब हम डायरेक्टली डिपेंड है ऑटोट्रॉपिक्स पर, राइट, मतलब जो अपना फूड खुद बना रहे हैं वो ऑटोट्रॉपिक है, रिमेनिंग एनिमल्स वो उन पे डिपेंड है, इसलिए वो हेटेरोट्रॉपिक है, क्लियर, हियर ऑटोट्रॉपिक वी हैव डिस्कस, हियर हेटेरोट्रॉपिक आगे के पॉइंट में आएगा, राइट, ओके, हियर other organism is utilize the complex substances. This complex substance have to be broken down into the simple one before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve these organisms used to biocatalysts and called enzymes. Thus the heterotrophs survival depend directly or indirectly on autotroph. Such heterotrophs organism including the animal or fungi, means other animals, heterotrophs animal वो direct और indirect so autotrophs पर डिपेंड है, क्लियर, सब एग्जांपल इज गिवन हियर, एनिमल्स मतलब हम भी उसमें से एक है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फंगी इज आल्सो एग्जांपल इज देयर, अंडरलाइन हियर, क्लियर, यहां से बोर्ड में मैक्सिमम एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइप पूछा है 2 मार्क्स में, व्हाट इज न्यूक्लिएशन, राइट, एंड सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो, राइट, आस्क व्हाट आर द एंजाइम्स एंड व्हाट आर द ऑटोट्रॉफ्स, राइट, एंड व्हाट आर द हेटेरोट्रॉफ्स, क्लियर, ये 3 क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम 2 मार्क्स और 1 मार्क्स में बोर्ड में पूछे हैं, क्लियर, इन दिस टॉपिक, ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस, राइट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, राइट, ओके, carbon and energy requirement of the autotrophic organisms are the fulfilled by photosynthesis, right, means plant is prepare the own food, this process is called the photosynthesis, you are already learned your previous classes, मतलब class 8 or class 9, right, quite simple, it is the process by which autotroph take a substances from the outside and convert them into store form of energy. This material is taken in the form of carbon, of sunlight and chlorophyll, right, carbohydrate are used for the providing the carbohydrate which are not used immediately are stored in the form of starch which serve as internal energy reserved to be used as and when required by the plants. A somewhat similar situation is seen is used where some of the energy derived from the food we eat is stored our body in our form of glycogens, right, means some different type of plant they are prepared, they are use the raw materials carbon dioxide, water or presence of sunlight and they are prepare the own food. After preparation of food actually देखा जाए तो प्लांट अपने ग्रोथ के लिए फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, एंड जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है वो एनर्जी को वो स्टोर कर देते हैं फ्रूट के फॉर्म में, सीड्स के फॉर्म में, राइट, या फिर लीफ के फॉर्म में, क्लियर, और वो एनर्जी एंड ऑफ डे, राइट, रिसोर्स ऑफ ग्लूकोज एंड ऑफ डे वही एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, मींस अदर एनिमल्स, क्लियर, ओके, means autotrophic nutrition means what, simple definition, right, some type of living organism they are use the carbon dioxide, water, present of sunlight, they are prepared the own food, right, and this process is called the autotrophic nutrition, right, example is a different type of plants, right, next we have discussed, right, this equation is also very important to, right, exam point of view 1 or 2 marks, clear, okay, chalo, next we have discussed the page number 96. Let us now see what actually happened during the process of photosynthesis. The following event occur during this process, right, मतलब exactly photosynthesis के ड्यूरेशन में, राइट, वो exactly different type of, right, reactions में, right, लीफ के अंदर exact क्या होता है वो हमको डिस्कस करना है, राइट, this one is the diagram, right, cross section of leaf का हमने cross section लिया है और स्लाइड बना के we are observing microscope, right, तो this type of हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्लियर, one by one we are discuss. Absorb the light energy by the chlorophyll, means this chlorophyll is play very important role is here, right, this chlorophyll क्या करता है वो sunlight को trap करता है, absorb करता है, right, means chlorophyll is play the very important role is there, right, second, conversion of light energy of chemical energy and splitting of water molecule into a hydrogen and oxygen, फिर end of day वो क्या करेगा, convert करेगा,
right? Chemical energy splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, and end of the वो oxygen और hydrogen में क्या करेगा, उसको convert करेगा, and this oxygen or water, right, water, this process is called the transpiration, right? And this water, right, oxygen, we use the other type of animals, right? Third, reduction of the carbon dioxide and carbohydrate, और वहां पे reduction होता है किसका, CO2 और carbohydrates का. Clear? मतलब these three, right, point is very important to exam point of view, right? Sometimes ask the one mark question is also here, right? Okay. Next paragraph, this step is need not take a place one after the other immediately. For example, diesel plant take up a carbon dioxide at night and prepare the immediate, which is the acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. Let us see how each of the component of the reaction are necessary for the photosynthesis. If you are carefully observe a cross section of leaf under the microscope, right, according to this figure, right, you will notice that some cell containing green dots, these green dots are the organelles called the chloroplast, which contain chlorophyll. Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. Means desert area plant, right, ये तो हमने नॉर्मल प्लेस पे प्लांट्स की बात की है, लेकिन डिजर्ट एरिया मतलब जहाँ पे वाटर का शॉर्टेज हो, वहां पे एग्जैक्ट क्या होता है, बिकॉज प्लांट नाइट के ड्यूरेशन में फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब अपना फूड बनाते हैं. बिकॉज रीजन इज सिंपल, इन डे ड्यूरेशन वेरी हॉट वेदर इज देयर, राइट. मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का. डिजर्ट एरिया में नाइट में प्लांट अपने लिए फूड बनाते हैं और डे के ड्यूरेशन में वो सर्वाइव करते हैं. क्लियर? एंड we are discuss the, right, in cross section, right, here lamina, इसी को हम leaf plate भी बोलते हैं. middle part is the midrib, right, phloem or xylem, right, and this one is vascular bundle. phloem or xylem is play the very important role, right. Yeah, you are already learned in your previous class, means class 9, right. Chloroplast. So what is function of chloroplast? Chloroplast is that trap the sunlight. Without trapping sunlight, right, photosynthesis process, food preparation process is not possible, right. And some space is present here. This one is air space, right, and this one is the guard cell. Guard cell is play the very important role, right, to open and close stomata, right. And here is the vexicuticle. Sometime of the vexicutical layer is also जो excess water है, right, internal जो प्लांट के अंदर वाटर है, राइट, उसको एक लेवल से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होने से वो प्रोडक्शन करता है वेक्सिक्यूटिकल, राइट. एंड अपर एपिडर्मिस एंड दिस वन इज लोअर एपिडर्मिक, राइट. दिस इज द क्रॉस सेक्शन. सम टाइम इन आर्ट्स बोर्ड एग्जाम ओनली 3 मार्क्स दिस डायग्राम इज आल्सो क्लियर. सो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. सी नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कस, राइट. वन एक्टिविटी इज ऑलरेडी गिवन हियर. ये एक्टिविटी में हमको चेक करना है, बराबर, स्टार्च टेस्ट चेक करना है लीफ का. तो वन मार्क्स वन क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर. स्टार्च टेस्ट के लिए विच सॉल्यूशन वी आर यूज, राइट. तो वो है आयोडीन सॉल्यूशन, और आयोडीन का फॉर्मूला है कैपिटल आई. क्लियर? मतलब लीफ के ऊपर से अगर हमको स्टार्च टेस्ट चेक करना है तो वी आर यूज द आयोडीन इज देयर, राइट. नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कस टू द नेक्स्ट क्लास, राइट. व्हाट इज फंक्शन ऑफ stomata open and close, right. Actually this topic is a very small is here, and this topic is also related to the cross section of leaf. अगर हम थोड़ा सा बराबर डिटेल में अगर हम देखें तो दिस वन इज द ओपन एंड दिस वन इज क्लोज स्टोमेटा. समटाइम आस्क इन बोर्ड एग्जाम इन 2 मार्क्स ओनली डायग्राम एंड सम डिफरेंट टाइप ऑफ लेबल इज आल्सो क्लियर. ओके, सी ये टॉपिक चलो हम फिनिश कर लेते हैं, राइट. जस्ट लाइक अ स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज, राइट. हियर मिडल पार्ट इज द, राइट, स्टोमेटल पोर, both side, right. Here space is more, so open stomata is here space is less, so this one is closed stomata, right. Here guard cell is play a very important role, right. When water is entered to dead duration, right, then guard cell is some opposite force is applying here and some space is here, and in night, right, stomatal pore is closed there, and here is the chloroplast, right. Some 1 marks question is also what is function of guard cell, right. 1 marks में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा है, clear. And chloroplast is play a very important role, right, to trap the sunlight, clear. This diagram is also very important to 2 marks, open and closed stomata, right. नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.